Yes, people, what up? Can you see me? Can you hear me? What's up? What's up? What's up? My health is better, दोस्त. Much better. वैसे 2-3 दिन से तो यार आई डोंट नो, पता नहीं कैसे यार. बट जैसे अब कल भी मैं मैराथन ले रहा था ना, तो शाम तक आते आते वापस से तबीयत खराब हो ही गई थी. मेरी फटी रही थी कि आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट प्रभु की दया से सीन्स गुड. मैं आज सुबह उठ के जिम चला गया. बस आज मेरे सारे मैराथन खत्म हो रहे दोस्तों. कल बैठता हूँ. कल तुमको तुम्हारी जेआईजीएल एसबीआई की दोनों की एनालिसिस शीट भेजता हूँ. जी सर, पधार. कैसन बा? खैर, आ, आपने तो ऑलरेडी 2 ओएलएस हो चुके हैं. दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वन. एक बार पेपर निकाल लें क्या? ठीक है सागर. एसबीआई का देखता हूँ यार, अगर एक और कहीं स्लॉट मिल गया तो करता हूँ कोशिश. बट अभी प्रायोरिटी यार थोड़ा सा बाकी सब निपटा लूँ ना. एंड थोड़ा सा लेट है दोस्तों. अभी तुम बैठ के मैराथन मैराथन के लिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा. मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तो क्या, मैं ऑलमोस्ट फ्री हो जाऊंगा एक दिन में. बस तुमको एनालिसिस शीट दे दूं, मेरा सबका ही काम कंप्लीट है. बट नॉट अ वेरी गुड थिंग कि अभी आखिरी के 10 दिन में भी ना अपन एक एक चैप्टर रिवाइज करें. बट मैं देखता हूँ. आई सी इफ आई गेट सम गुड टाइम, वो भी करते हैं. आ गया ना? ठीक. आई हैव केप्ट द पेपर विद मी ओवर हियर एज वेल. जी सरकार, पधारे. कैसी चल रही है बाकी? नहीं, मैं धीरे ही बोल रहा हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. कल सर सुबह ले लीजिए, शाम में एसबीआई का ओएलएस. फिर सात्विक, जब मैं सुबह वो रिवीजन करा रहा हूँ ना, तब तुम बोलोगे एनालिसिस शीट का है. फिर मैं जब एनालिसिस शीट बना रहा हूँ तुम बोलोगे रिवीजन का है. फिर जब मैं दोनों के बीच में बोलूंगा कि एक चीज के लिए रुक जाओ, तो फिर तुम बोलोगे अरे ये क्या बात है.
तो इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़े से और काम भी करता हूँ, बट आई अप्रिशिएट हाउ यू थिंक दैट आई एम कंप्लीटली फ्री ऑलवेज। मानना तो पड़ेगा तुम्हें। हाँ जी, आवाज सही हो जाएगी, मैं धीरे बात कर रहा था। आई वाज ट्राइंग टू सेव माई एनर्जी यहाँ पे। बाकी पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है। सर पढ़ने का मन नहीं करता, अगर ऐसा लगे तो तारीख देख लो, 6 महीने और न पढ़ना पड़ जाए, इससे अच्छा है अभी पढ़ लो। डन, पधारे। डन। हाँ कितना कूल है, कल सुबह ले लेना, शाम में ओवरलेस कर देना। हाँ चलो, वील ट्राई अबाउट दैट। यू नो हाउ आई टेक अ ओएलएस, यू डोंट सी मी स्क्रीन पे, आपको आंसर्स दिखते रहेंगे, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, वी हैव टू राइट आंसर्स। ऑब्वियसली मैं बीच बीच में थोड़ा सा डिक्टेट करता रहूंगा, अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए तो। पूरा पेपर सॉल्व करना है। लेट मी फर्स्ट टेल यू सम स्ट्रैटेजी फॉर योर जय जय। आराम से समझना, सीखना, बहुत ही सिंपल सा पेपर है, अच्छे आएंगे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आएंगे। कैसे चलना है देखो, 6 क्वेश्चन है इन टोटल, ठीक है। 6 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं। कितने? 2 क्वेश्चंस। पहला मैंडेटरी क्वेश्चन है, और 99% केसेस में पहला क्वेश्चन आप मान के चलना कि इट इज गोइंग टू बी अ पैसेज स्टाइल क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको आगे 5 5 2 2 3 3 नंबर के क्वेश्चंस मिलाते हैं। जैसे पिछली बार डेट की हम डबल पैसेज खेलेंगे और दो 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 नंबर के क्वेश्चन डालेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछली बार ये दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन, 10 नंबर पैसेज स्टाइल, उसके नीचे फिर से एक और पैसेज स्टाइल दिया, और फिर से 2 3 2 3 का कॉम्बिनेशन बनाया। यानी कि जो क्वेश्चन 1 होता है, जो आपका क्वेश्चन 1 होता है, वो 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 1 20 मार्क्स का होता है। एक ही पैसेज देंगे, 5 5 5 5, 4 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। एक पैसेज देंगे, दो के 5, एक और पैसेज देंगे, 2 3 2 3। यानी कि आप ये साइकोलॉजिकल तौर पे तैयार रहना कि जो क्वेश्चन 1 है उसमें कभी कभार 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 10 10 नंबर का बना देने वाले। ज्यादा चांसेस इसी के होता है क्योंकि इनके पास जेआईएल में चैप्टर्स बहुत है, दे वांट टू प्ले अराउंड। सो देयर इज अ ग्रेटर चांस कि क्वेश्चन 1 में आपको 2 पैसेज मिल जाएंगे। श्योर? 2 मिनट अब सुनोगे तो मैं बताऊंगा ना, गाइडेंस अबाउट सेल्फ रिविजन और ये वाला। ठीक है, आ जाओ, बहुत ही बढ़िया, अब ध्यान दो। सो क्वेश्चन 1 मैंडेटरी क्वेश्चन, 20 नंबर के लिए या तो 5 5 के 4 हो सकते हैं, दो के स्प्लिट हो सकते हैं। दो वाले अपने लिए खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं ना? क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट करवा देते हैं। सो कीप इन माइंड कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन 1 इतना बड़ा आ रहा है तो आपको टाइम पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि दिखने के लिए आप 7 8 क्वेश्चन लिख दोगे, पर असल में होते भाई वो सिर्फ 5 5 नंबर के 4 ही क्वेश्चन है। तो अपने को टाइम बैलेंस करके चलना है। श्योर? अभी अपन आते हैं उसके बाद। सेकंड क्वेश्चन मैंडेटरी होता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको अमूमन तौर पे 15 नंबर मिलते हैं। 5 5 नंबर के स्ट्रेट 3 क्वेश्चन होते हैं। जनरली दिखते केस बेस पर होते डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन 3 मैंडेटरी होता है। वापस से क्वेश्चन 3 में भी आपको ए बी सी 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, 5 5 नंबर के। सो क्वेश्चन 1 पैसेज 20, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं अगर किसी ने पहले वाला अटेंड नहीं किया है। क्वेश्चन 1 पैसेज इंटू 2 हो सकता है 20 मार्क्स। क्वेश्चन 2 मैंडेटरी है, क्वेश्चन 3 मैंडेटरी है, दिखते केस बेस हैं बट वो डायरेक्ट भी होते हैं। ये जोड़ के होते हैं आपके 30 मार्क्स, है ना? 15 मार्क्स ईच। आर वी टुगेदर? क्वेश्चन 1 2 3 में कुछ ऑप्शन नहीं होता। 4 5 6 में 2 ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन 4 ऑप्शनल होगा, क्वेश्चन 6 ऑप्शनल होगा। क्वेश्चन 4 इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी, या फिर ए में 1 2 3। सही है? वापस से 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, 15 15 के वापस से। अब 4 में जो 15 नंबर है, आपको देखना है कि कहां आपका टाइम भी बच रहा है, कहां आपके ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। कब क्वेश्चन चेक करना है बताता हूं, पहले आप समझना। क्वेश्चन 4 में ऑप्शन होता है ना? 15 मार्क हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन 5। अच्छा,
क्वेश्चन 5 में भी 5-5 नंबर के ही आपको फिर से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। श्योर है? क्वेश्चन 5 भी 5-5 नंबर के 3, और लास्ट में होता है क्वेश्चन 6 जो भाई साहब 5-5 नंबर के आपके लिए 4 क्वेश्चंस लेकर आता है। बट क्वेश्चन 6 में ऑप्शन मिलेगा, तो क्वेश्चन 6 इज ऑप्शनल। क्वेश्चन 5 केस डायरेक्ट 15 मार्क्स, एंड क्वेश्चन 6 ऑप्शन अवेलेबल 5 मार्कर क्वेश्चन इंटू 4 20, बन गए तुम्हारे 100 नंबर। सही है? श्योर? जैसा ऊपर 1 2 3 था वैसे ही 1 4 6 था, मतलब कि 1 20 मार्क्स का होता है, 6 20 मार्क का होता है, 4 में ऑप्शन होता है, 6 में ऑप्शन होता है। डन। बाकी सब 15 नंबर के चलते हैं। क्वेश्चन पैटर्न समझ में आया? बता रहा हूं अनीश, 2 मिनट शांति तो रखो। डन। सो ये होता है आपका क्वेश्चन पैटर्न। ठीक है दोस्तों, आवाज सही है ना? आई थिंक दिव्यांश तुम्हारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मुझे यहाँ पर बैकएंड पे दिखता है कि आवाज कितनी जा रही है, विच लुक्स एकदम करेक्ट मुझे। मतलब इससे अगर 2 dB कम भी वॉइस आती तब भी सही है वॉइस। ठीक है, नाउ आपको पेपर में मिलेंगे टोटल 3.25 घंटा। है ना दिव्यांश, तुम्हारी प्रॉब्लम है 3 घंटा 15 मिनट। अब कभी भी पहले 15 मिनट की अप्रोच याद रखना। पहले 15 मिनट में अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल, ये सॉरी, सबसे पहले देख लो पैसेज। मतलब आपको सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखना होगा। अब आपको समझ में आएगा मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन टाइप क्यों बताया। सबसे पहले देख लो क्वेश्चन 1, पैसेज क्वेश्चन। कैसे देखते हैं वो बता रहा हूं, आप खाली स्ट्रैटेजी याद रखना। सबसे पहले देख लो पैसेज स्टाइल क्वेश्चन, है ना? दिया, मुझे बताने तो दे मेरी जान। पैसेज क्वेश्चन सबसे पहले। अब इसके बाद आना ऑप्शनल क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 6। थैंक यू सो मच कशिश। सो सबसे पहले देखना पैसेज क्वेश्चन, फिर देखना क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6। इसके बाद टाइम बच जाए आराम से क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 देखते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट क्यों? क्योंकि इसमें पैसेज पढ़ना होता है तो टाइम लगता है, इसके अंदर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं इसलिए टाइम लग जाता है। आई डोंट वांट यू गाइस टू लेटर ऑन, जब आप पेपर में होंगे, मोमेंट में होंगे, तब बैठ के टाइम वेस्ट करो कि 4 करना है कि 4A करना है। ये आप पहले से सॉर्ट करके रख लेना कि मेरे को यार 4A करना है या फिर 6 करना है, ये क्लियर होना चाहिए। श्योर? तो ये हो गया अपना पेपर रीडिंग का टेक्निक। विल स्टार्ट विद पैसेज, विल गो टू ऑप्शन क्वेश्चन। नाउ जब आप पैसेज स्टाइल क्वेश्चन रीड करते हैं, कभी भी नेवर स्टार्ट फ्रॉम हियर, गो डाउन ओवर हियर, पहले क्वेश्चंस देख लो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके लिए पैसेज की कोई जरूरत ही नहीं होती, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट मुझे यहां से ये तो पता हो कि ऊपर पैसेज के अंदर कहां से मेरे को सोल्यूशन ढूंढ के आना है। Whether opening of Sanjay's old case under the amended law violates fundamental right under the Indian Constitution। ठीक है, अच्छा ये बात तो नक्की हो गई कि अपने को ऊपर एक बार रीड तो करना ही पड़ेगा पैसेज। पर यहाँ पे उसने लिखा है वेदर ओपनिंग ऑफ संजय's ओल्ड केस, संजय का पुराना केस है, नए अमेंडेड लॉस के अंदर ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे को समझ में आ गया कि आर्टिकल 20 के अंदर लेके जा रहे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉस। तो ऊपर मेरे को ढूंढना है कि संजय का ओल्ड केस क्या था, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। Thus, compelling Sanjay to provide thumb impression and voice sample amounts to violative of Article 20, sub Article 3. Self incrimination. क्या आप किसी को फोर्स कर सकते हैं टू बिकम अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ? पर यहां पर जो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि संजय अपना थंब इंप्रेशन दे रहा था और वॉइस सैंपल दे रहा था। दिस इज नॉट गिविंग एविडेंस अगेंस्ट इटसेल्फ, तो शायद मेरे हिसाब से आर्टिकल 20 का वायलेशन नहीं होगा। संजय वॉज डिटेन्ड फॉर 3 days विदाउट प्रोड्यूसिंग हिम बिफोर अ मजिस्ट्रेट
डिसाइड वेदर दिस एक्ट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 22, 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना होता है। अब इसके लिए मेरे को ऊपर पैसेज में देखना ही नहीं है, मेरे को ऊपर पैसेज में देखना है कि उससे वो थंब इंप्रेशन कहाँ लिया है, मेरे को उसके लिए देखना है कि वहां क्या दिया हुआ है, और न्यू केस स्टार्ट हो रहा है, मुझे उसके लिए देखना है कि ओल्ड केस खत्म हुआ था, क्या हुआ था। संजय वॉज डिनाइड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जब वो कस्टडी में था, क्या ये इसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है या फिर नहीं है, मतलब राइट टू लाइफ इसका वायलेशन है या फिर नहीं है। एंड इफ संजय's family directly approached the high court against his detention, what is the remedy available to him? मेरे हिसाब से ये एकदम डायरेक्ट है, दिस इज अ रिट। सो 3 और 5 में मुझे पैसेज की जरूरत नहीं है, 1, 2 और 4 के लिए मेरे को जाके एक बार ऊपर चेक करना है, मेरे को 1, 2, 4 के लिए एक बार जाके चेक करना है। आर वी टुगेदर? श्योर? ये होता है पैसेज स्टाइल रीडिंग। क्वेश्चन रीड किया, अब ऊपर चलो। मिस्टर संजय owned a small factory in Pune. In 2023 he was fined 50,000 by the Pollution Control Board. 2023 में उसको फाइन लगाया था क्योंकि वो अनट्रीटेड वाटर वेस्ट नियर बाय रिवर में छोड़ रहा था। At that time the law was to fine for such violation. Sanjay paid the fine and the case was closed. In 2024 state legislature amended the environmental laws. Now the same offense carries exemption. 2024 में लॉ चेंज हुआ है, अब इसमें 1 साल की इंप्रिजनमेंट भी है पर फाइन, पर जब संजय ने किया था तो 50,000 ही था। The authorities reopened Sanjay's old case and issued a warrant for his arrest under the new law, even though the offense took place before the change. I think I have an answer for one now. Yes, this violates Article 20 sub Article 1 for sure. पुराना मैटर पुराने लॉज में पुराने एक्ट में ही कंप्लीट होगा। Police took Sanjay's custody and kept him in police station for 3 days. I have the answer for second without producing him in front of magistrate. That's violative for sure. During questioning, the officer forced him to give thumb impression and voice samples, arguing that it did not require his consent as they were not statements. क्या बोलते हो? थंब इंप्रेशन तो ले ही सकते हैं। संजय was suffering from severe asthma while in custody. उसको सीरियस अस्थमा अटैक आया पर मेडिकल केयर नहीं दी गई। He collapsed finally before being taken to a hospital. Sanjay's family went to High Court pleading that his fundamental right under Article 20, 21, 22, right to life भी infringe हुआ ही था। The state pleaded that the new law was necessary for public interest and for environmental safety. क्या बोलते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। चल डन है, आर वी गुड टू गो? लेट्स राइट इट अप। क्वेश्चन समझा? अच्छा एक देखो, आपको कुछ एक बात समझ में आई? अरे अटेम्प्ट में आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। मैं जिस अटेम्प्ट में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेता हूँ उसे बच्चे बहुत फाड़ के नंबर लाते हैं, इसमें तो मैंने कुछ ज्यादा ही नंबर ले लिए। मुझे बहुत ज्यादा ही दिख रहा है कि इस बार तुम आग लगा दोगे, तुम निश्चिंत रहो मेरे ऊपर। क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन रीड करना, अब तुम्हारे पास आंसर आ गए, फिर नीचे वाला क्वेश्चन देखना, फिर आंसर आ गए, फिर जाना क्वेश्चन 4, फिर जाना क्वेश्चन 6। दिस इज आई वॉन्ट यू गाइस। सर मार्किंग इन क्वेश्चन पेपर, नो, मार्किंग इन क्वेश्चन पेपर इज नॉट अलाउड। आपको ध्यान रखना है इस पर ना। ओके, नाउ ये तो मेरा, तुम्हारा नहीं, तो ECFL का आंसर है। मेरे साथ लिखना। आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे, निश्चिंत रहो।
चलो शुरू करेंगे। द स्क्रीन इज ऑफ, लेट्स स्किल इट अप। हर क्वेश्चन के साथ मैं वापस मिलता रहूंगा। प्लीज स्टार्टिंग में टाइम मत वेस्ट करना, फट 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 लिखते रहना मेरे साथ, स्पीड मेंटेन करना। ऑलवेज रिमेंबर दैट एक क्वेश्चन में, एक टिपिकल 5 मार्कर क्वेश्चन में आपके पास 7 to 8 मिनट्स होते हैं स्पेंड करने के लिए। 8 मिनट्स हायर साइड पे होता है आपके पास स्पेंड करने के लिए। इसके बाद थोड़ा सा पेपर आप रिस्कियर जोन में लेके जा रहे हैं। 9 मिनट तो लास्ट है, 8 मिनट तक कर ही लेना, 9 मिनट तो लास्ट हो जाता है। तो अगर अगर आप 20 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो टेक्निकली आपके पास 8 into 4, मतलब जो 8 मिनट है, 4 क्वेश्चन के हिसाब से मैं कर रहा हूं, यही आपके पास टाइम है, दैट इज 32 मिनट्स है। तो क्वेश्चन 1 को करने का टारगेट रखते हैं 30 मिनट्स के अंदर। अगर हम क्वेश्चन 1 35 मिनट्स में कर पा रहे हैं, वी आर गुड। अच्छा, आई से दिस 1000 टाइम्स, पहला आंसर इंसान स्लो लिखता है ना, पहला आंसर इंसान स्लो लिखता है। सो मेरी तरफ से पहले आंसर में 5-7 मिनट इधर उधर चले भी गए तो कोई बात नहीं, वो सबका इंप्रेशन वाला पॉइंट होता है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे, एग्जीक्यूटिव करोगे, चलो क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। नहीं, बॉल पेन। अच्छा, मैं हमेशा क्वेश्चन 1 करने के लिए बोलता हूँ जय जेल में। रीजन, आप पेपर वाले को जब आगे पीछे क्वेश्चंस करके दिखाते हो, उसमें जनरली आप ये प्रूव करते हो कि वो वाला मुझे ज्यादा अच्छा आता है, ये वाला मुझे कम अच्छा आता है। सो मेरे हिसाब से जब आप डायरेक्ट सीक्वेंस फॉलो करते हैं, दैट्स चौड़ में कहना कि ज्ञान चा अपने को सब आता है। हाँ जी। तो आई बिलीव आप सबको पता है, अपन आयरैक स्टाइल में आंसर लिखते हैं, तो गोज विदाउट सेइंग दैट आपको कैसे आंसर लिखना है। दिस इज क्वेश्चन 1A, उसका अपन फर्स्ट लिख रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं 2 आंसर्स भी लिख दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए, लेट्स स्टार्ट टू आंसर टू 1। whether opening of Sanjay's old case under the amended law violates his fundamental right of Indian Constitution. I've told you 1000 times, we follow IRAC style while writing. As per Article 20, sub Article 1 of Constitution, it provides protection to every person against ex post facto laws, that is laws that punish which was not an offense when it was done। अपन ने 10:30 से स्टार्ट किया, ये मान के चलो। सो नो पर्सन shall be convicted of any offense except for violation of a law
in force. Neither he can be subjected to a greater penalty than what the law inflicted when he committed that offense. Hence, in this case, the opening of Sanjay's old case under amended law violates his fundamental right. Violates his fundamental right. चले, we're done. ओके, मैं 1A के साथ 1-2 भी यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है. 2 का क्वेश्चन क्या है? Does compelling Sanjay to provide thumb impression and voice sample amounts to violation of Article 23? Let's go with introduction. What is Article 20, sub-article 3? As per Article 20, sub-article 3, no person shall be compelled to be a witness against himself. That is, the accused cannot be forced to give evidence against himself. However, physical evidences like fingerprints, handwriting, blood samples, एक मिनट, and voice samples
can be lawfully obtained and even without consent. Hence, the act, hence, the act of compelling संजय, क्वेश्चन से उठा सकते हो इसको, compelling संजय to provide thumb impression or voice sample is not violative of Article 20 सब Article 3. क्या बोलती पब्लिक? हाँ, आप न्यू क्वेश्चन न्यू पेज आराम से चला सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। आप तो न्यू क्वेश्चन न्यू पेज ही चलाओ, मैं जबरदस्ती क्या बैठ के यहाँ पे पेपर वेस्ट करूँ ना आपका। चल, डन है सर। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम डबल जीओपैडी? डबल जीओपैडी का मतलब होता है एक आदमी को एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश करना। इस क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है कि वो पिछले एक्ट के अंदर पनिश हुआ था, इसीलिए वहां पर डबल जीओपैडी नहीं लग सकता है। अगर पिछले में पनिश हुआ होता और फिर से पनिश कर रहे होते तो ये क्वेश्चन डबल जीओपैडी का बन जाता। संजय was detained for 3 days without producing him in front of the magistrate. कर दी गलती। हाँ, दूसरे पेज से ही लिखो। 2 मिनट। इसको क्या हुआ? चल रहा चल रहा। ठीक है। एक्स्ट्रा पेन कैरी किया करो, ऐसे होता है। देखो मास्टर के पास पेन नहीं, फंस गया ना मास्टर। क्वेश्चन क्या है? Sanjay was detained for 3 days without producing him before a magistrate. Decide whether this act of police would amount to violation of Article 20. Yes. इंट्रोडक्शन हमेशा स्टार्ट करना इंट्रोडक्शन से, एज पर आर्टिकल 22, एज पर आर्टिकल। सब आर्टिकल तो मेरे को खुद को याद नहीं, मैं खुद एज पर आर्टिकल 22 ही लिखने वाला हूँ। अब है ना, थोड़ा सा पंक्चुएशन पे ध्यान दो। एज पर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमा। कभी भी अपन सेक्शन एक्शन कुछ बताए ना, पहले ये बता दो, उसके बाद लिखो। एवरी पर्सन who has been detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours.
of arrest. However, the above time excludes the time of journey necessary from the place of arrest to the court. अब कंपेयर करके कंक्लूड कर देते हैं. इन द गिवन केस संजय तो 3 दिन के लिए डिटेन था ना. Sanjay was detained for 3 days without being produced in front of magistrate and the same would amount to violation of his fundamental rights under Article 22. But it doesn't really help much unless they've asked it. फालतू का करना है तो कर सकते हो. राजा लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं. चलो 1A4 क्या है क्वेश्चन. संजय was denied medical services while in custody. Discuss whether a violation of fundamental. हाँ आर्टिकल 21 का वायलेशन है, राइट टू लाइफ. सेम उसी जॉनर में आंसर लिखेंगे. As per Article 21. आप नोटिस कर रहे हो मैं कॉमा कहां लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, प्लीज इस पे ध्यान देना थोड़ा सा. आप चाहो तो इसको इन्वर्टेड्स में कह सकते हो. नो पर्सन शैल बी deprived of his life and liberty except according to the procedure established by law. सही है. राइट टू लाइफ इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट. अब जो ऊपर क्वेश्चन था ना उसी को यहाँ पे ऐड कर देंगे. include within its ambit the right to health. In the given case,
depriving Sanjay from proper medical treatment in the event of serious asthma attack amounts to violation of his right to life under Article 21. Yes, बिल्कुल सही अपूर्वा डन है शेरो लास्ट क्वेश्चन क्या है If Sanjay's family directly approaches the High Court against detention, what is the remedy? Writ of habeas corpus. हाँ, habeas corpus. In the present case, since the detention is unlawful, then the person himself or any of his relative or friend may approach the High Court for passing of writ of habeas corpus. Under this writ, the High Court judicially inquires in the validity of the in the validity of the अच्छा अभी जैसे मुझसे गलती हुआ ना अगर कुछ गलत हो इतना सा कट खचा 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 करके कुछ भी मत करना सिर्फ एक सिंगल कट लगाने का और आगे बढ़ जाने का है ना गंदगी मत करना another it the high court judicially inquires into the validity of the detention and to set free the person if the detention is unlawful if the detention is unlawful so in the given case Sanjay's family can directly approach to High Court under Article 226 for passing
ऑफ अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। खत्म। भवन नहीं, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो आप डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। डन है दोस्तों, क्या बोलते हैं? took us 20 minutes to write the first 10 marker। आ जाओ, क्वेश्चन 2 देख लें। अनिल ऑफर्ड ब्रिजेश टू सेल हिज हाउस फॉर अ प्राइस ऑफ 1 लाख। ठीक है, अनिल ने ब्रिजेश को ऑफर किया है, ऑफरर है, ऑफरी है, टू सेल हिज हाउस फॉर अ प्राइस ऑफ 1 लाख, बट ब्रिजेश ऑफर टू बाय इट फॉर 95,000 ओनली। काउंटर ऑफर दिया ब्रिजेश ने। लेटर अनिल सोल्ड द हाउस टू प्रीतम फॉर 1 लाख। अनिल ने तीसरी किसी पार्टी को ये घर बेच दिया है। ब्रिजेश has filed a suit on Anil claiming the damages under breach of contract. Does the legality behind? No. ब्रिजेश विल नॉट विन। ब्रिजेश नहीं जीतेगा ना, काउंटर ऑफर दे दिया था। काउंटर ऑफर इज रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, बेसिक रूल। 2 नंबर, discuss the provision relating to acceptance of offer under the Indian Contract Act. Acceptance must be communicated, acceptance must be clear. If there is a mode of acceptance prescribed, then the same should be done in that mode only. Acceptance should be unqualified. Acceptance should be given within reasonable time. A counter offer works as rejection. These are the conditions. Discuss the provision regarding to mode of revocation of offer under the Indian Contract Act 1872. कब कब रिवोक कर सकते हैं अपन लोग? Before the offer has been accepted, revocation can be done, or either of the party dies before the contract is entered upon. आजाद रैन अवे फ्रॉम, यार इनमें से कुछ भी हेड क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, सब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। थैंक यू। पानी भी दे देते। हाँ जी। आजाद रैन अवे फ्रॉम हिज फादर्स, ओके, मेरे को घर, बाप का घर किस लिए भाग सकता है? Azad ran away from his father's home. His father issued a pamphlet offering a reward of 50,000 to anyone, कुत्ते को ढूंढ के ला वाला एग्जाम्पल है, who brings the boy. Hari saw the boy at a hotel. ना कर लाला। हरी, हरी, मैं आगे जानना भी नहीं चाहता, प्लीज इसके बाप को मत बताना। हरी, वैसे ही तेरे नाम में ऑलमोस्ट हरीश है, प्लीज डोंट डू दैट। इन्फॉर्म दिस, हल्के लो। वो भागा नहीं था, उसका प्लान था। प्लान इतना जल्दी बना कि वो भाग कर गया वहां तक। देयर इज अ डिफरेंस। है आजाद, ये 50,000 हरी को कभी नहीं मिलने दूंगा, ये मेरी जवानत। ध्यान रखना आजाद, मैं जिंदा। आजाद फादर रिफ्यूज हरी द रिवॉर्ड। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉ वेदर हरी इज एंटाइल्ड टू नाइट। नहीं मिलेगा। आपको पहले ऑफर पता होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था क्वेश्चन, सॉरी ऑफर। सिंस हरी को इस जन्म में कॉम्पनसेशन नहीं मिलने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे इसका जवाब गलत लिखना पड़े, पर हरी को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ये मेरी जबान है। आजाद तू, चलो। सो अच्छा, एक चीज देख लो, क्या एक भी चीज ऊपर पैसेज के काम की नहीं है, एक भी चीज ऊपर पैसेज के काम की नहीं है। तो तो हम कहां थे? ऊपर पैसेज आपको रीड करना, कर लो, आई डोंट नीड इट। चले लाला, कहां थे अपन?
आजाद की आजादी नहीं छीनी यार, आजाद के साथ जो किया ना, मैं कभी फुर्सत में बैठेंगे बताऊंगा। मुझे दुख हो रहा है यार अभी आजाद के लिए। दोस्तों ये नंबरिंग सही करना है, इसमें गलती हो जाती है बहुत बार। हम्म। तो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ यार। अनिल ऑफर्ड ब्रिजेश अ हाउस, कहाँ गया, to buy 95,000, later Anil sold the house of Preetham for 1 lakh. Brijesh filed a suit for Anil claiming the damages. Had under the Indian Contract Act 1872, to make a binding contract, there must be there must be unconditional acceptance to the offer, and a counter offer is deemed to be rejection of the original offer. In the present case, in the present case, Anil made an offer to sell his house for 1 lakh to Rajesh, who in turn made a counter offer of 95,000. The above conduct of Brajesh is deemed rejection of offer. Hence, no concluded contract was paid, so he cannot claim compensation. He cannot claim compensation. He cannot claim compensation if later Anil sells the property to, किसको बेच रहा था वो, प्रीतम। रे प्रीतम प्यारे। डन है।
What are the provisions regarding acceptance of an offer under Indian Contract Act 1872? As per section 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, comma, the proposal is said to be accepted. सेकंड, इसने क्या बोला था? प्रोविजन. Following are the provisions regarding a valid acceptance. May be express or implied. Acceptance must be communicated. Mere silence cannot amount to acceptance. Counter offer acts as rejection of the original offer. कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 3 नंबर है. ठीक है, एक और लिख लो. If the offer is to be accepted by acting upon it, then the same shall be deemed to be accepted if the person acted in that manner. ये ना बस क्वेश्चन. Discuss the provision regarding the acceptance of offer under 3 नंबर की बात है. एक और ऐड करना अगर चाहिए तो. Acceptance must be given within
रीजनेबल टाइम। इसमें स्क्रीन चालू ही थी क्या? एक मिनट, हाँ बोलो बिल्लो, समझा क्या? चलो, discuss the provision regarding the mode of revocation of proposal. Quite a direct one. चलता है अश्विनी, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। हम्म। Revocation means cancellation of offer. A proposal may be revoked in the following manner. The offerer may revoke it before acceptance by communicating the same to offeree. जब ज्यादा बड़े पॉइंट हो जाए तो गैप्स दे दो, ए बी के बीच में भी, है ना? यस, माइल्स विद तीर, आप कर सकते हैं ऐसा। बाय द डेथ और insanity of the offerer by lapse of time where the offeree fails to fulfill any condition precedent. बहुत है। जाने दोस्तों, चलो नेक्स्ट अप लास्ट क्वेश्चन है। लेट मी सी द क्वेश्चन। थैंक यू। क्वेश्चन है, Azad ran away with his father's home. His father issued a pamphlet offering a reward of 50,000 to anyone who brings the boy home. ठीक है, अच्छा देखो,
50,000 to anyone who brings the boy home. Hari saw the boy at a hotel and informed his father. Azad's father refused Hari the reward. Discuss with the help of relevant case law whether Hari is entitled to the reward or not. Okay, ठीक है. Offering a reward by offering a reward by pamphlet amounts to general offer. ठीक है. Offering reward by pamphlet amounts to general offer. A general offer may be accepted by anyone as it is given to world at large. So anyone who knows the offer can. Anyone who knows the offer can claim reward in the present case. In the present case, एक मिनट. In the present case में सिर्फ question लिख देना. In the present case, Azad's father made a general offer. Azad's father made a general offer of 50,000 to anyone who brings back his son. Mr. Hari if after reading the offer saw the boy at hotel. अभी देखो अज्यूम कर रहे हैं कि हरी और ब्रजेश कनेक्टेड तो है नहीं. अगर हरीश देखकर उसके फादर को फोन कर रहा है मतलब उसको रिवॉर्ड पता ही होगा ना, तभी तो उसके फादर को फोन कर रहा है, वरना ऐसे रास्ते चलते किसी को भी देख के अपन किसी को भी फोन थोड़ी करते हैं. So Mr. Harif, after reading the offer, saw the boy at hotel and informed the father, shall be eligible for reward. The precondition above is that he must know the offer as acceptance cannot precede
offer. Acceptance cannot precede offer. A similar case was of Harbhajan versus Harcharan, where a boy was missing and a reward was offered to anyone who brings back the boy home. क्लियर है शेरो? तो इसको आप यहाँ लाइन कर सकते हैं. डन. 45 मिनट्स लगे अपने को करने में. आई टोल्ड यू 30-35 मिनट्स, रिजर्व में 40, इससे नहीं हो सकता. ठीक है, अपन क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहे थे, थोड़ी मस्ती भी कर रहे हैं, तो ठीक है, तुम इतने में कर लोगे, 35 मिनट्स के अंदर कर लोगे तुम. और इक्का दुक्का आंसर में तुम छुटपुट करते ही हो तो हो जाता है. जस्ट अ मिनट. डन शिट. आ जाओ. नाउ the Municipal Governance Act lays down general rules for property taxation on all building in the city. Property taxation on all. ये मेरे को बहुत सूसू आ रही है. चलो क्वेश्चन रीड करके फिर. Including residential and commercial building. However, the Heritage Site Preservation Act specifically stated that heritage building maintained by recognized trust shall be exempted from municipal property tax. ठीक है, तो मतलब मेरे को यहीं पे थोड़ा सा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का फील आ रहा है शायद. म्युनिसिपल गवर्नेंस ने रूल बनाया है, टैक्स लगाओ सारी बिल्डिंग्स के ऊपर, जो भी रेसिडेंशियल हो कमर्शियल हो. हेरिटेज साइट एक्ट बोलती है कि हेरिटेज बिल्डिंग पे टैक्स नहीं लगता है. In 2023, the municipal authorities imposed property tax on a historical building maintained by a registered heritage trust, arguing that the general rule of property taxation will apply on all the properties. The trust challenged the tax demanded by authority, discussed with reference to the principle of interpretation. General versus special. क्या स्पेशल प्रिवेल करता है दोस्तों जनरल वर्सेस स्पेशल में? याद है जनरल और स्पेसिफिक में क्या प्रिवेल करेगा? Ravi, an MBBS student, a reputed government medical college, was removed. Special was removed from the institution on the ground of regular unsatisfactory academic performance. ये यहाँ पे अपने कुछ failure of natural justice में वो exceptions में पढ़ा था कि in the last 3 semesters the college authorities passed a formal removal order based on his repeated failure to secure minimum grades. Ravi contended that he was neither given a prior notice nor opportunity of being heard. He approached the High Court alleging violation of his right to principle of natural justice. Does this come under classic case of exceptions to natural justice? Sunshine Solar System Private Limited operated a solar panel manufacturing plant on the outskirts of a city. As a part of the operation, it stored large quantities of dangerous chemicals compound used in the panel coating. Solar systems थे, large quantity में dangerous chemical. मेरे हिसाब से वो absolute liability की तरफ ले जाने वाले. It followed all the safety protocol and government regulation. 100% वहीं जाएंगे. One day, a tank with the material ruptured, causing the chemical to leak into a nearby field owned by Surya and destroyed its crops and contaminated the soil. Surya sued Sunshine Solar Private Limited for damages. Discussed the applicability of Relin versus Fletcher in this case. Examined whether Surya can claim damages under the rule of strict liability. इसमें कोई exception है ही नहीं ना? MC Mehta versus Union of India.
1 मिनट का खाली सूसू ब्रेक दे, हो गया, वापस आता हूँ और फिर अपन इसको आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। डेंजरस चीज भी लाया था ना, डेंजरस चीज थी तो अपन लगा दें इस पे। यहाँ पर कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितना ध्यान रखा, नेचुरल है नॉन नेचुरल है, मरस। मैं तुमको बता, मैं डायरेक्ट जिम से आके इधर ही बैठ गया हूँ, डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ तुम्हारे साथ। दिन ब दिन तुम देख रहे हो मैं यूट्यूब पे कितना फ्रैंक होता जा रहा हूँ। बस कुछ बोलना मत, आ रहा हूँ। मम्मा, मेरे को एक कॉफी दे दोगे क्या? हाँ, 1 मिनट है दोस्त। कहाँ है? चलो, Q8, ठीक है ना, 8 मिनट्स, खत्म करो इसको 8 8 मिनट्स पे। नाउ as per statute of interpretation, if there is a general provision, then it must apply
to all the matters universally unless there is any special enactment on a particular matter. If there is a matter which comes under both, that is special and general enactment, then the former shall prevail. In the present case, in the present case, एक मिनट मैं सिर्फ क्वेश्चन खोल जरा. The Municipal Governance Act 2010, which prescribes property tax for every building, is a general law which should apply, which should apply. ये ले लेगी क्या? वो कप दे दो ना उधर से, पानी पियो और हाँ, पानी. Universally to all buildings, that is residential and commercial. That is residential and commercial. However, there is a special act the Heritage Sites Preservation Act 2012, which exempts heritage buildings from municipal property tax. Therefore, the special law will prevail over general law in
matters of heritage properties, in matters of heritage properties, and the action of municipality of charging tax on heritage building is unsustainable. खत्म. Unsustainable and invalid. Clear है शेरो? To begin natural justice. The principle of natural justice states that justice must not only be done, but should also be seen to be done. It assures procedural safeguard to everyone by providing them proper notice, proper opportunity to present its case, and reasoned judgment. However, however, the above rule have certain exceptions as well. When natural justice cannot be claimed as a right. When the law specifically excludes the rule of natural justice. When the law specifically excludes the rule of natural justice. In case of urgency
इमरजेंसी academic evaluation impractical। ठीक है, अब देखो, वो गवारो, तुमको समझ में आ रहा है ना मैं आंसर को स्ट्रक्चर कैसे कर रहा हूँ? मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर प्रोविजन बता रहा हूँ, मैंने ये प्रोविजन तक ले आया, अब बस मैं कंपेयर करूंगा इन द गिवन केस उसको क्यों निकाला था, और कंक्लूड कर दूंगा कि भाई एकेडमिक एवेल्युएशन एक सफिशिएंट ग्राउंड है जहां पे आपको निकाला जा सकता है, और इसमें कोई नेचुरल जस्टिस का प्रोविजन खराब नहीं होता, एंड इट फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन। है ना, थोड़ा सा बुद्धि लगाते चलना। अब देखो, वैसे मेरे को केस का नाम याद है, जैन यूनिवर्सिटी, बट मैं अब अगर मान लूं मुझे केस का याद नहीं आ रहा तो मैं ऐसे लिखूंगा, इन अ केस a student was removed by college based on continuous unsatisfactory performance, based on continuous unsatisfactory performance without giving any notice or opportunity of being heard, but the court upheld the decision. The given case of Ravi's removal based on continuous unsatisfactory performance Ravi removal based on continuous unsatisfactory performance is not violative of natural justice, as it falls under exception, hence no notice or OOBH was required। ये नेक्स्ट पेज पे भी ले जा सकते थे, और अगर नेक्स्ट पेज पे ले जाते तो अपन लोग नेक्स्ट पेज को खाली छोड़ देते। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट आप चाहते तो नेक्स्ट पेज पे भी ले जा सकते थे। डन है शेरों?
आ जाओ। Let me read question 3. Sunshine Solar System Private Limited operated a solar panel manufacturing plant. As a part of its operation, started large quantities of a dangerous chemical compound used in the panel coating. It followed all the safety protocols and government regulations. One day, a tank with this material ruptured, causing the chemical to leak into a nearby field owned by Surya and destroyed its crop and contaminated the soil. Surya sued Sunshine Solar Private Limited for damages. Discuss the applicability of the rule in Renan versus Fletcher in this case. ठीक है, पहले अपन रेलन वर्सेस फ्लेचर बताएंगे और फिर इसको एब्सोल्यूट पे लेके चलेंगे. And can Surya claim damage? Obviously he can. Chalo. Discuss the applicability rule in Renan versus Fletcher in this case. It's question 2C. In the case of Reland versus Fletcher, thank you. In the case of Reland versus Fletcher, a mill owner got a reservoir constructed outside his mill through an independent contractor who negligently did not observe mining shafts, because of which plaintiffs' coal mines was flooded. The court evolved the strict liability rule in this case and stated that whoever brings upon his land anything dangerous shall be the insurer of the safety of his neighbors if that thing escapes. If that thing escapes. Further, the applicability of strict liability was clarified in Reed versus Lyons, a non-natural use, a escape. In India,
the rule of, in India, the rule established in Renan versus Fletcher was discussed for hazardous and inherently dangerous industries, inherently dangerous industries in MC Mehta versus Union of India, where the court further held that any person who brings any dangerous or hazardous thing on his land shall be absolutely liable without any defense of him taking the highest precautions. So, in the given case, क्या नाम है कंपनी का? Sunshine Solar Systems Private Limited can be held liable under the rule of strict or absolute liability. And इसने क्या compensation मांगा था ना? Surya can claim compensation even if the company was not at fault. बोलो शेरो. ए दोबारा जमा कोड पॉइंट लिख के लेना. लिख लो. सर ऑडियो अल्टरम पार्टम का मैक्सिमम भी लिख सकते थे ना पिछला. हाँ उसमें कर सकते थे ऑडियो अल्टरम पार्टम. मेरे को तो एक्सेप्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस ज्यादा अच्छा आंसर लगता है. ऑडियो अल्टरम पार्टम कर सकते हो, हेयर द अदर साइड, बट देन एकेडमिक इवैल्यूएशन का प्रॉब्लम डायरेक्ट पॉइंट है, इसीलिए मैं नहीं लिखता. क्या बोलती पब्लिक? अब देखो इसको अपन ने बिल्कुल सही टाइम पे कवर कर लिया, राइट? ये तीनों आंसर 7-8 मिनट में हो गए.
सर ये स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना है, नहीं करना तो मत करो, चलता। डन है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3। Sunny filed a suit against Yogesh for the recovery of valuable antique unlawfully taken by Yogesh. Sunny claimed the sculpture was rare and valuable artifact. During the hearing, Sunny alleged that Yogesh may dispose of the property to his benefit. Injunction मांग रहा है. How to get help from summary notes and answer. तो मैं थोड़ी तो पागल हो तुम, वैसे ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा हो, पर थोड़ी हो। अब अब चुप चुप हो जा, साले पेपर चल रहा, डिस्टर्ब कर रही जी। अ गैंग ऑफ सिक्स, मैं यहाँ पे गैंग ऑफ सिक्स पढ़ के बता सकता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ जाने वाला है। ठीक है, गोज विदाउट सेइंग, ये डकैती की तरफ जा रहा है ना। A person raided a jewelry shop owned by Sony at night. They had loaded guns and other weapons with them after the loot while they were running away. शाबाश। याद है क्या ये एम्परर वर्सेस लश्कर वाले? When Ramesh saw them and tried to stop them, he was shot down by one of them. With the help of the relevant provision of BNS, discussed the kind of offense they've committed and explained every offender is liable for murder of Ramesh. Yes, everyone is liable. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम्म, सब लाइबल है, सब लटकेंगे, डेथ पनिशमेंट मिल सकती है। The state of Gujarat enacted the Social Harmony Act 2021, which included a provision in Section 5 prohibiting citizens from organizing public meetings without prior public approval. वाह 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 वाह, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, ये तो भाई मेरी फ्रीडम्स के खिलाफ है। Without prior, now other provision of the act under Section 8 promoted awareness program for communal harmony in schools. A citizen group challenged the validity of the act in the High Court, alleging that it violated their fundamental rights. Obviously, the government pleaded that the act served as a valid constitutional purpose and the complete act should not be declared void. Only Section 5 should be severed. Okay. Referring to the provision of Article 13 of Indian Contract, I explained whether provision to an act be severed. हाँ, हो सकता है ना। If only that section can be avoided, remaining purpose legislature की इंटेंट पूरी करता है तो चलता है। सिविरेबिलिटी, डॉक्टर ऑफ सिविरेबिलिटी आया, बहुत ही सिंपल है ये तो, मस्त। 5 नंबर एकदम भर भर के खाएंगे। लो, ये 3 क्वेश्चन पे अपने टाइम बचाएंगे। चला चला भाऊ चला, 1 नंबर। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? सनी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट योगेश फॉर रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल। ठीक है, केस फाइल हो गया था ना। whenever in a suit in which a property is involved, and the same is in any way, and the same is in any way getting destroyed or lost, then any party may apply to court
for temporary injunction. Following are the grounds for injunction. Following are the grounds for injunction. A, that the property in dispute is in danger of being wasted or destroyed. That the defendant threatens to remove the property that the defendant threatens to cause damage to the property. The court, if satisfied, can order, the court, if satisfied, can order a temporary injunction until the disposal of suit. In the present case, since sculpture was rare and valuable, and the एक second ना क्वेश्चन क्या था? And the dispose of the same can cause irreparable injury the court may, if satisfied, then in its discretion may pass an order of temporary injunction. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर प्रेजर्वेशन के लिए होता है सिमर,
इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर तब लगता अगर ये चीज नेचुरल डीके वाली होती, खराब हो जाती है ना। ये स्कल्पचर है, स्कल्पचर दिन में पिघलते थोड़ी है, बाहर रखा तो स्कल्पचर चेंज होके हड्डी तो नहीं बनेगा ना। चलो अभी डन। नेक्स्ट तो 310 डिकॉइटी लग रहा भाई, लिख लिया सबने? ये ना, तुम कोई भी बैच से हो, डिकॉइटी मैं हमेशा याद ही करवाता हूँ, रटवाता हूँ। एज पर सेक्शन 310 ऑफ BNS 2023, when 5 or more persons commit or attempt to commit, याद है रॉबरी, then every person so committing or attempting is said to commit dacoity. The punishment for the same is A, life imprisonment, or rigorous imprisonment of a term up to 10 years and fine further if any of the above person commits murder in the course of dacoity, then every person shall be held liable for punishment for murder with dacoity, that is, with death or life imprisonment or rigorous imprisonment of 10 years and fine. एक मिनट रुकना, हाँ।
So, in the given case, the act of one dacoit of the murder of Ramesh shall make all others liable to for murder with dacoity, which may carry डेथ पनिशमेंट. ऑफ ऑल मेरे को सबसे अच्छा आंसर ये लगा. यस ब्रोस. जमा. हो गया लिख के. Article 13 of Constitution recognizes the Article 13 of the Constitution recognizes the doctrine of severability as Article 13 states that any law which is violative of fundamental rights shall be void to the extent it violates the fundamental right. The doctrine of severability states that if only a part of law violates any fundamental right and that the same, if severed from the law, if the remaining part is capable to fulfill the intent of the
legislature. If the remaining part is capable to fulfill the intent of the legislature, then only the invalid part shall be severed. However, if the valid part cannot be severed from the invalid part, or it does not fulfill the intent of legislature, then the entire law shall be declared void. Entire law shall be declared void. अब आ जाओ इस केस पे. In the present case, section 5 of the State of Gujarat enacted, sorry, ये हटा देना. सॉरी मैंने क्वेश्चन में गलती से पूरा उठा. Section 5 of the Social Harmony Act 2021. In the present case, Section 5 of the Social Harmony Act 2021 prohibited citizens from organizing public meetings without prior approval was violative of Article 19 However, the state contention is justified that only a part of law is violative and the remaining law after severance can be kept as it is as it fulfills legislature's
intent. Doctrine of severability will apply, and only the invalid part, that is section 5, shall be severed. The remaining law बोलो शेरफ जमा क्या देना हैगा हेलो जी मैम मैं लेक्चर में हूँ बोलिए एक काम करिए ना आप मुझे शाम में 8 बजे कॉल करिए क्वेश्चन 4 ऑप्शनल है Okay. Amir and Bhanu were business partners. They had a serious dispute over profit sharing. A week later to this dispute, Bhanu was found dead due to poisoning. Aye. Investigation revealed that Amir had a rare poison shortly before Bhanu's. Investigation Amir had purchased a rare poison shortly before Bhanu's death and was heard saying that he will regret this betrayal. After Bhanu's death, Amir was seen destroying several financial records related to their business. Discuss the relevancy of the fact. Okay, section 6. Relevancy. Rest. Arjun and Rayansh entered into a business agreement containing an arbitration clause. Later, a dispute arose between Ramesh filed a suit in the district court. Upon receiving a notice to the suit, Rayansh applied to the authority for referring the matter for arbitration before submitting his first statement. Rayansh could attach only a photocopy of the agreement with his application as the original arbitration agreement. A certified copy was with Arjun's possession. Discuss the remedy available to Rayansh under section. हाँ फोटोकॉपी से भी चल जाएगा देखो अगर तुम ओरिजिनल देते हो तो बेस्ट है नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी दो नहीं तो फोटो कॉपी दो साथ में लिख कर देना है कि सामने वाले को बोलो वो प्रेजेंट करेगा उसके पास सर्टिफाइड कॉपी Priya forced Neha to sign a check of 50,000 in her favor, else she will publish false and damaging information about Neha's family in local newspaper. Neha, afraid of the damage to her and her family's reputation, did accordingly and signed a check. Discuss the offense. Extortion है. Distinguish between extortion and the hi Chatti. Hi Milabita. Ah. Da. आई जा 2 मिनट का ब्रेक है आओ यार तुम हाय हाय ओए मेरा बेटा सबका हाई कर दो लासा कहाँ है लासा कहाँ है इसे कंगन खराब हो गया इसको दिलवा दे वापस से उसको बोल दे कि ये वाला ले लो और बताओ क्या करवाना है दूसरा वाला पहनती है ना हाँ मेरा बेटा अच्छा एक मिनट सबको उम्मा तो कर दे बाय गाइस मैं जा रही हूँ टाटा आप सब अपना ध्यान रखना अच्छे अच्छे से पढ़ाई करना मैं तो चिल करूंगी मेरा कोई खासा काम है नहीं मैं तो प्ले स्कूल जाती हूँ तुम बड़े हो गए मैं तो रेस्ट करूंगी बाय हर हर महादेव कर दो हर हर महादेव ठीक बाय मैंगो खाएगी बाय बाय बाय
बाय हाँ चलो ध्यान में आएंगे मेरा बाय टाटा। नहीं है क्यों? हम्म। चलो आ जाओ। ये हैं 3 क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे वैसे। इसके नीचे क्या है? रवि एंटरप्राइज issued a written instrument to Mehta Traders stating I owe you 500, ठीक है, and will pay you as soon as possible. Mehta Traders treated this document as a promissory note and should be enforcing it. However, Ravi Enterprise contended that this is mere acknowledgement of a debt and therefore not enforceable as a promissory note. Based on this fact, explain the essential requirement. भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ज्यादा अच्छा है. Unconditional promise to pay, it should be certain, the pay should be certain. ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है. I like this. अगर सेकंड अच्छा निकला तो मैं यही करूंगा. The main body of rules and principle of Indian law is adaptation of English law. Discuss the various source English laws का डायरेक्ट वो लॉ मर्चेंट याद आ रहेगा. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, कॉमन लॉ. ये ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, छोटे हैं. Certain categories of information has been exempted from disclosure under section 8 of the RTI. तीनों ज्यादा अच्छे. याद आ रहा है क्या? ये तीनों ज्यादा अच्छे. अपन सेक्शन 4 का पार्ट बी करेंगे. दिस सेव्स टाइम. ठीक है प्रज्ञा जी, करवाता हूँ. 1 मिनट सर, दोनों ऑप्शन करा देते. बेटा मैं जूते पहन के नहीं आया हूं ना, मुंह पे मारता हूँ. वो बड़े प्यार से मारता है. ऐसा मत समझना कि मेरे को तुमसे कोई द्वेष या गुस्सा है. इस तरह गला घोटते हैं. पागल हो गए क्या थोड़े से? सूसू करके आ रहा हूँ, फिर ये लिखेंगे 4A. एक सेकंड दोस्तों, एक ही सेकंड.
सर बीवी सर ने लास्ट में ऑप्शन क्वेश्चन डिक्टेट कराया था। बीवी ने अभी तक 3 ओएलएस लिए क्या? मैंने लिए, है ना? तो सबका अपना अपना तरीका होता है ना बेटा। विक्की ने मेरे को फोन किया था, मैंने उसको बोला मैं ऑप्शंस क्यों सॉल्व करवा रहा है? ऑप्शन थोड़ी सॉल्व कराते, तुमको पेपर स्ट्रैटेजी बतानी है। चलो। जूते नहीं मिले यार। मजा आ गया। चलो, 4A। 1। क्या क्वेश्चन है? रवि issued a written instrument to Mehta. I owe you 500. ठीक। Mehta is treating it as a promissory note and sought to enforce it in the NI. However, Ravi Enterprise ended that the mere acknowledgement of the debt conditional, therefore not enforceable as a promise. Hat। तो सबसे पहले बता दो promissory note क्या होता है? Promissory note is an instrument in writing which contains an unconditional undertaking, that is promise, to pay a certain sum to a certain person at a particular date or certain event. Following are the essentials. A. It must be in writing. B. It must contain an unconditional undertaking to pay. The maker must sign the instrument. So the maker and pay must be certain.
The amount to be paid must be certain. It must be duly stamped. In the given case, एक सेकंड में क्वेश्चन देखना है. Ravi Enterprise issued a written statement issued a written statement that they owe कितना है 500 है ना ₹500 to Mehta Traders is an acknowledgement and not a promise to pay. Hence, the instrument does not qualify as a valid promissory note under the Act. डन है दोस्तों. आयरैक चल रहा है, राइट? Introduction, reasoning, analysis, conclusion. Just a minute. Hello. 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 Hmm. What is question 4A2? The main body of rules and principle of Indian law is adaptation of Indian law. Discuss the various sources of it. Okay. डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. Following are the main sources of English law. कॉमन लॉ आप सबको पता है, ये अनरिटन लॉ है, राइट? It is the unwritten law of England
which was evolved by the judges through decisions these are body of rules these are body of rules the primary source of which are the customs and hello precedents. Common to the whole realm. Law merchant. It is the most important source of mercantile law and relates to customs and usages in their dealings in the ordinary course of business. अरे आई एम सो सॉरी इसको प्लीज यहाँ पर बी कर देना आई एम सॉरी सी होल ऑफ द रीम पूरे के पूरे लोगों के ऊपर सेम लागू होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी when there was no remedy available in law then the king used to transfer the cases in court of chancery where the judge who was usually a bishop used to solve the cases not as per rigid letter of law but as per
Justice good conscience. The rules so evolved in those code became principle of equity, and the codes were called court of equity. The courts were called court of equity. And D इतना लिखने की जरूरत नहीं, statute laws. बोलो जमा दोस्तों. इसके आगे लिख सकते हो. That is the act of parliament. हाँ हाँ. 483. क्या क्वेश्चन है 483? Question. Certain categories of information has been exempted under section 8. ठीक. फ्रेंडली रिलेशन से लेके आए थे, फॉरेन स्टेट से, कोई प्रिविलेज है, ट्रेड सीक्रेट है, वो वाला पॉइंट है. Right to Information Act 2005. Right to Information Act 2005 recognizes certain exemptions under section 8 where the citizen shall not be provided with information. कौन से हैं? Information which prejudicially affects the sovereignty and integrity of India. 5 मार्कर क्वेश्चन है, कम से कम 5-6 तो चाहिए ही चाहिए. Information received in confidence from foreign governments the cabinet papers or deliberations
of Council of Ministers information which includes certain intellectual property right or trade secrets, information which has been prohibited, information which has been prohibited from disclosure by the court, any personal information information that hampers any investigation or prosecution of offender हम्म, और क्या रह गया breach of parliamentary privilege बहुत है यस यस लिख लिया बेटा वो एग्जेम्प्टेड नहीं है ना वो आदित्य बंदोपाध्याय वाला केस है जिसके अंदर जो चीज मैंने सेव नहीं करी वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा हम्म, हाँ जी लिख लिया अच्छा देखो जब डायरेक्ट क्वेश्चन हो ना यू डोंट नीड टू गिव एक और लिख सकते हो मतलब अगर चाहिए तो लिख लेना इन्फॉर्मेशन विच एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन लिख सकते हो हम्म तो जब आप ये लिख रहे हो ना तो इनमें कंक्लूजन की जरूरत नहीं थी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ओपन शट है इसके अंदर मत करना ना कंक्लूजन चलो फिर Rajesh, a software developer, wanted to start offering secure digital contract services to his clients. हेलो बोलिए हाँ तो शायद बोलिए हम्म हम्म हाँ हाँ हम्म हाँ 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 ठीक है हम्म हम्म हम्म
क्या? नहीं, कितने में पड़ेगी? हम्म। हम्म। नहीं, बेचने के लिए नहीं है। ठीक है, दे दूंगा। मतलब 1750 में करवा दोगे वो? नहीं सर, मेरे को 1650 का ऑफर दिया था ना आपने। हम्म। तो अभी वाली आप 1820 कर दोगे, और फिर उसमें 70,000 का डिस्काउंट होगा, तो आप 1750। सर मैं काम करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी देर में लगाता हूँ। ठीक। ठीक। हम्म, हम कहाँ थे? सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ये वाला पेपर लिखने में। ठीक। ये तो जानदार ही जाता है पेपर। हम्म। Rajesh, a software developer wanted to start offering secure digital contract services for his clients. ठीक है। For this purpose, he applied to a license certifying authority for issuance of electronic signature certificate. He submitted the application form and paid the required fees. However, he did not get certificate of practice. अच्छा, वैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटमेंट देना जरूरी होता है, या फिर एक स्टेट में, हाँ लिखा है ना, द पर्टिकुलर्स. The certifying authority, after preliminary examination, decided to reject the application without giving an opportunity to present his case. राजेश ने चैलेंज कर दिया इस डिसीजन को विद द competent authority for rejection of unlawful. Explain the procedure for obtaining electronic signature. Decide whether Rajesh's application can be rejected without being heard. सुनना जरूरी था कि नहीं था? अबे इतना सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है यार. Ambuj, who was executor to the will of a deceased person, dishonestly disobeyed the law which directed him to divide. आय हाय 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 हाय. देख रहे हो मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है, यहीं पे दिख रहा है सामने. 7 साल वाला लफड़ा है कि वो सर्वेंट निकला तो. Discuss in detail the kind of offense under Ambuj by the BNS and what are the punishments. What is the period of limitation? Which shall be the limitation begin to run for compensation for slander, for compensation for libel, for compensation for malicious prosecution. ये देखो, इन्होंने लास्ट टाइम मालूम क्या किया? लास्ट टाइम इन लोगों ने वो क्लासिफिकेशन थे ना, 30, 12, वो वाले सारे, उनके अंदर से ऑफेंसेस निकाल ली कि भाई 1 साल, 3 साल, कितने कितने साल में केस कर सकते हो, खाली लिमिटेशन पीरियड बता दो. अगर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया है तो क्या होगा? एंड बाय अ लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजेशन फ्रॉम अ टेनेंट. ये बचाएगा अपना टाइम. तो इन दोनों क्वेश्चन वैसे ए और बी, ये एक्चुअली इन लोगों ने अच्छे दिए. 5 का एबीसी तीनों ही छोटे आंसर्स में. आ जाओ, फट 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 लिखेंगे. यहाँ तक कितने लोगों ने लिखा है मेरे साथ साथ, क्योंकि बताना कितने लोगों ने बकायदा लिखा है. हे मार्केट, थोड़ा सा मार्केटिंग कर लो प्लीज. इंसान को पैसा की जरूरत है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज थोड़ा ऊपर चले जाओ. एक वर्ड तक मिस नहीं किया. चलो, बहुत ही बढ़िया. वेरी गुड शेरो, वेरी गुड. प्रभु तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, और तुम इतना अच्छे से लिख रहे हो, भगवान करे तुम्हारा पेपर भी इतना ही अच्छा जाए. तुम तब भी इतना सारा भर भर के लिख कर लेकर आओ, भर भर के नंबर लेकर आओ, तुम्हारी अच्छी अच्छी नौकरी लगे, बहुत सारा पैसा कमाओ, बढ़िया सी शादी करो, नौरा फतेही जैसी दिखती हुई तुम्हारी बीवी हो, नहीं तो आदित्य रॉय कपूर जैसा तुम्हारा पति हो. तुम लाखों कमाओ, तुम करोड़ों कमाओ, उन करोड़ों में से तुम कुछ छांटे अपने मास्टर पे भी उड़ाओ. मास्टर मैं हूं. चले.
एक सेकंड, सॉफ्टवेयर डेवलपर वाले ना। अंडर, हाँ गए, IT Act 2000, द प्रोसीजर, अब मेरे को उसका सेक्शन याद नहीं है तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, द प्रोसीजर टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट is as follows. Make an application to the certifying, make an application to the certifying authority for the issue of certificate. B, the application shall be accompanied with either a certificate of प्रैक्टिस। अब देखो, अगर तुमको कभी शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तो एक बार लिख दो, उसके आगे ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म डाल दो, फिर आप आगे वापस से शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। शैल बी अकम्पेन्ड विद आइदर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कोई तो पूछ रहा था इसके लिए, नहीं बताया, वैसे मुझे पता है, आपको पता ही होगा। और अ स्टेटमेंट justifying the need of the same. The application should be submitted along with the prescribed fees the certifying authority may, after making due inquiry, after making due inquiry, accept or reject the application, provided further that in the event of rejection, the applicant must be given opportunity of being heard by, लिख रहा हूँ ना?
Hmm. Provided further that in the event of rejection, the applicant must be. क्या लिखा है? Further in the event of rejection, the applicant must be opportunity of being heard. In the present case, एक सेकंड, केस में नाम क्या है इसका? राजेश. Certifying authority rejected Rajesh's application without providing him any opportunity to represent his case is a clear violation of the procedure. Hence, the decision is irregular and invalid. एक second. Decide whether Rajesh's application can be rejected without being heard. Irregular, invalid, and the application cannot be rejected like that. हम्म, रचना जी क्या बोल रही हैं आप? क्या मिस हो गया आपका? सेकंड क्वेश्चन, भगवान मेरे बच्चे कैसे लिखते हो यार, तुम्हारे हाथ नहीं दुख जाते? मेरे हाथ की फट गई है. Ambuj, who was an executor of the will of a deceased person, dishonestly disposed. The law directed him to divide the effects according to the will and appropriate them to his own due. Discuss in detail the kind of offense committed under the BNS and what are the punishment prescribed for the various for this kind of offense. ठीक है. डन है. ठीक. सीबीटी. ए सीबीटी का सेक्शन कौन सा था बताओ तो जरा. हम्म. सीबीटी का सेक्शन कौन सा था? अब किसका फोन आ रहा है? लेबर लॉज लिखा, अब हाथ नहीं दुखते. हाँ, और साला मैंने लेबर लॉज डिक्टेट किया था. अब मेरा मुंह नहीं दुखता बोलते बोलते. मेरे को सीबीटी का सेक्शन याद नहीं आ रहा है. 323 है. एक बार देख लेंगे. पक्का तुम श्योर हो ना सालो? पोपट मत करवा देना.
एक मिनट है खाली। तीन सौ चौदह डिसअप्रोप्रिएशन भागीनाम। ठीक। अच्छा 315 क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर? ये सारा सीबीटी 316 है। ओ कुत्ता, सीबीटी 316 है। मानो तुम्हारी वजह से मैं, तुम सब 323 लिख रहे हो, मेरी फट गई। मैं कहा मेरे दिमाग में 316 क्यों आ रहा है? हाँ 323 तो उस टाइम हो गया ना, क्रेडिटर से बचाने के लिए। हाँ, बोला ना तुमको, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। खुशी शाह को देखो। हाँ हाँ सर, भरोसा रखो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। खुशी बेटा अपना मैसेज डिलीट करेगी, थूकूं स्क्रीन पे तेरे ऊपर। साला 323 लिख रहे हो, मेरी फट गई यार। और क्योंकि बीएनएस नया है ना, मेरे को भी एकदम ऐसे सेक्शंस हाथ पे नहीं। कुत्तों, पागलों, गवारों, और कुछ रह गया था? काट लो, आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, काट लो। हम्म, ये देखो, whoever is any manner interested with property, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, डोमिनेट ओवर प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली कन्वर्ट कर देता है खुद के यूज के लिए, यूज कर लेता है उसको इन वायलेशन ऑफ द लॉ, या फिर अग्रीमेंट प्रिस्क्राइबिंग दैट डिस्चार्ज, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ चला जाता है, हैज डन सीबीटी। हाँ यार, अच्छा मैं कसम से बोल रहा हूँ। तुमको क्या लगता है इन बिटवीन पेपर में बुक खोलूंगा? तुम सब 323 इतना कॉन्फिडेंस में लिख रहे थे, मेरी फट गई। मैं कहा सीबीटी 323 हो गया है। आज के बाद मुंह मत दिखाना अपना, और तुमसे मैं कुछ पूछूंगा नहीं। मैं कहा यार तबीयत खराब है, इंसान हो सकता है। चलो, इसलिए मैं कभी सेक्शन लिखती नहीं हूँ एग्जाम में। हाँ, जब तक श्योर ना हो तब तक मत लिखना, और ऐसा क्यूमुलेटिव में तो बिल्कुल मत लिखना, गोली मार दूंगा अलग से। चलो, एज पर सेक्शन 316 ऑफ बीएनएस 2023, ये याद है अपन ने इसको याद किया था, हुएवर इज इन एनी वे entrusted with any property or has been given dominion over such property dishonestly misappropriates or converts for his own use, or convert for his own use such property
in violation of law or any contract. Commits the offense of breach of trust. किसी ने रीचेक किया मतलब बात बढ़िया और हाँ सालों फाड़ दी तुमने। तो ठीक है ऐसी बात नहीं मतलब मैं भी भूल सकता था उसका कोई तकलीफ नहीं है। बट मैं एक बार झटका सा लगा। एक तो ये मेरी पेंसिल की रिफिल खत्म हो रही इससे याद रखना कि एक एक्स्ट्रा पेन जरूर कैरी करिएगा। ऐसा हो सकता है 1 मिनट रुक जाओ। Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with हेलो जी मैम कौन बोल रहे हैं। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम ले लिया मैंने नया इंश्योरेंस। ऐसा भी नहीं कि बाय बोल दे ले लिया कार इंश्योरेंस रख दिया फोन। हाँ जी 5 years और फाइन और बोथ। द पर्सन committing CBT is a carrier slash clerk slash servant, then he shall be punished with imprisonment up to 7 years and fine if the person committing CBT is ओए ये वाला केस याद है क्या इधर। मैं पब्लिक सर्वेंट लिख रहा हूँ बच्चा सिंह बच्चू सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा याद है क्या पंजाब। if the person committing CBT is a public servant then इसको हाईएस्ट होती थी अप टू 10 years एंड फाइन। then he shall be क्या है इसमें liable for imprisonment up to
10 years and fine or life imprisonment. बहुत बढ़िया। इसमें कंक्लूजन की जरूरत है। एक मिनट रुक जाओ। अंबुज नाम था। In the given case, Ambuj has dishonestly disobeyed the will which was entrusted to him, hence he is liable under section 316 for an offense of criminal breach of trust and shall be punished accordingly. Shall be punished accordingly. मेरा iPad अटक रहा है, मैं लिख चुका हूँ accordingly already. क्या बोलती पब्लिक? क्या यार? क्या तुम चाहते हो कि तुम खुद लिखोगे अब बाकी के आंसर? तुम मुझे चाहते हो कि मैं जाऊं और मैं रेस्ट करूं क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई? ठीक है, ओके बाय। गेंचा। ठीक है, 5C लिखकर सुसु करते हैं। हाय उदास बालक। साथ में मतलब तुम तुम्हारे, मैं अपने। घटिया लोगों, चीप लोगों, एक नंबर के एकदम चीप प्रो मैक्स हो तुम लोग। लो, इसमें तो क्या है, फटफट फटफट लिखते चलते हैं। क्या क्या है? आ जाओ भाई। प्रिस्क्राइब द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। वन वन मार्कर है पांचों। कहाँ है? What is the period of limitation for following suits and time for which such period of limitation begins to run? स्लैंडर जहां से बोला है वहां से 1 साल। लिबल सेम 1 साल। मलिशियस प्रोसिक्यूशन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता है 1 to 3 years वाले में 1 साल। तो स्लैंडर, लिबल, मलिशियस प्रोसिक्यूशन 111। Any suit for which no period of limitation is provided elsewhere in this schedule
फॉल्स अंडर 1 to 3। अगर कुछ भी नहीं दिया तो 1 to 3। इसके अंदर आप लिख देना where the highest time could be 3 years। Landlord to recover possession of land from a tenant। 12 में आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, लिख लेते ना। सो देखो, libel is one, slander is one, malicious prosecution is one. Any suit for which no period of limitation is written, it falls under 1 to 3 years. So the maximum could be 3 years, highest. And landlord to recover possession 12 years। Classification याद है क्या? हेलो चिराग जी। हम्म, चलो चलते चलते हैं। Limitation period in the following cases shall be a एक सेकेंड, कॉम्प्रेसिव स्लैंडर है ना पहला। One year from the day when the act of slander was done, that is where wrong was thing was said or done। सेकंड क्या है? लेबल। सुनो ना, लेबल सेम है। विकास सर की क्या टेक्निक थी? सी क्या है अब? कहाँ गया क्वेश्चन? कर लिख सकते। मलिशियस प्रोसिक्यूशन। इसमें क्या अपील लिख रहा है क्या? नहीं ना, अपील नहीं है ना? 1 year। अच्छा हाँ, मलिशियस 1 year फ्रॉम द ब्रैकेट में लिख देना टाइम टेकन टू ऑब्टेन द कॉपी ऑफ डिसीजन shall be excluded। बस लास्ट क्वेश्चन चल रहा है मेरे हिसाब से, एक 15-20 मिनट हो जाएगा। तो फिर मैं चपाती बना के जाती हूँ। हाँ, क्योंकि उसके बाद मेरा वापस से ईटी का मैराथन है। हाँ, तो मैं खाना खा के वापस आ जाऊंगा। डी क्या है? कहाँ चला जाता है यार ये क्वेश्चन? फोन बार बार बंद क्यों जाता है? एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस। Is prescribed
then the law allows a highest of 3 years to institute a suit. और क्या रह गया? To recover possession from a tenant. हाँ जी, कितना करें? ख्याल नहीं रखती, उसको जिम जाना है, बाद में उसको फोन करो, गाली देगी मेरे को। 12 years from where the period of tenancy comes to an end. वो अपने जिम थोड़ी मिस करती है, मार दे मुझे पर अपने जिम ना मिस करे वो। डन है। एक सूसू ब्रेक लेते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देख ले। Indian contractor Samir gave a piece of plot to Munshi, a tailor, to make a suit from it urgently within 2 days. Ready on time and managed to get it ready for delivery. Samir refused to pay him extra amount as agreed. ठीक है। We will discuss the remedy available to Munshi. Also discuss the difference between general and particular meaning. ठीक है। Ravi maintains a current account with XYZ Bank in Delhi on 15/2025. A check was issued in favor of Mini for 250,000 towards payment of goods purchased. Instead of sending the physical check to Mina's bank for clearing, XYZ Bank scanned the check, created its electronic image, and transmitted it through the clearing house recognized by the RBI. The physical check remained with Ravi's bank branch. Mina claimed that no payment could be demanded by Ravi as only electronic image was sent. had चलता है ना, check includes an electronic image also. Discuss whether Mina's objection based on the absence of physical movement has any merit. Check includes a truncated image of the check as well. IT Act 2000 इसको बिल्कुल recognize करता है. It is completely valid. मीना एकदम फुद्दू है, मीना की बात नहीं रहेगी. The parliament is not in session. Both the houses have been prorogued. ठीक है. Therefore, due to urgency, President wants to pass an ordinance in national importance. Discuss in detail referring to the ordinance making part. Article 123 President 123. Ordinance making part. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. ड्यूरिंग द म्युनिसिपल, मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है. बी और सी तो बिल्कुल ही छोटे हैं. During the municipal council election in Nagpur, Ramesh, a registered and eligible voter, reached the polling booth to cast his vote. However, the preceding officer refused to allow Ramesh to vote despite having been valid identity documents. Later, it was found that Ramesh's preferred candidate won the election and Ramesh suffered no financial loss. Ramesh filed a suit against the preceding officer claiming damages for violation of his legal right. Discuss the remedy. एक से ना registered eligible voter. Torts. Injuria sign damnum. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो 6 तो बहुत ही बढ़िया है. नीचे क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट रीजनल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस? कुछ नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में है. साइनिंग अथॉरिटी, अगर तुमको याद हो, जब लगा रहे थे तुम्हें पता था. ऑल्ट्रेशन डिटेक्टेबल होता है. ठीक है. एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा. अच्छा, एसपीडीए का क्वेश्चन है, सॉरी. डिस्कस एज टू व्हेन अ बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा. व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट अंडर. ठीक है. 3 लाख से ऊपर का याद है क्या? वेयर वंस द टाइम हैज बिगिन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी कैन स्टॉप इट. सेक्शन 9. डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल में. ठीक है. 6 जल्दी होगा. 6 ए के मुकाबले 6 जल्दी होगा. 6 करेंगे अपन. चलो सूसी करके आ जाते हैं और उसके बाद 6 करते हैं.
जी सरकार पधारे। एक ही मिनट। बाजार इज नॉट बाजारिंग, इट इज नॉट गिविंग अस रिटर्न्स। चलो सब सुसु करके आ गए, वेरी गुड। पधारे। 6A। यस यस, देखा मैंने, मुझे अच्छा लगा। मैं नीचे कमेंट में लिखने वाला था, मत कर लाला मत कर। एक ही सेकंड। अच्छा। एक मिनट रुक जाना, मेरे को खाली एक बार सीएसईटी वालों को मैसेज करने दो ना। एक मिनट रुकना, मैं वही कर रहा हूँ। क्या नाम है? एक तो साला इतने ग्रुप में मैसेज करना पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ भेजो कहाँ नहीं भेजो। मोस्टली तो हर जगह भेज ही दिया। हाँ जी शुरू। पधारो। चलो चलो जल्दी खत्म करें, आखिरी में जबरदस्ती का टाइम पास कर रहे हैं ज्यादा। 6A।
In case of contract of bailment for reward, that is non gratuitous bailment, if the bailee expands his skills and labor on the goods bailed, then he shall be entitled for remuneration as agreed between parties, or reasonable remuneration if nothing was agreed. If the bailer fails to pay the amount, then the bailee has the right of lien on such goods. The bailee has the right on lien such goods. That is, he can retain the goods until payment for the same is done. So, in the given case, Munshi can retain the goods, can retain the goods until the remuneration fixed is paid to him by Mr. Samir. By Samir. ठीक है. Further, lien is of two kinds. A, general lien, is the right to retain any property against any payment
due to particularly is the right to retain those goods on which skills and labor has been expanded, and the claim of remuneration is against those goods only. बोलो दोस्तों, क्या तक हम सब साथ हैं? आ जाओ 6 में बी. A check is a bill of exchange drawn by a drawer on a specified banker and is always payable on demand, and further it includes the electronic image of a truncated check. Electronic image of a truncated check. Truncated check means a check which is truncated, that is converted into electronic image by the clearinghouse and substituting the physical movement of check. एक मिनट मेरे क्वेश्चन देखने देना XYZ है ना इसमें. In the given case,
XYZ Bank scanned the check that is truncated it and transmitted to clearinghouse, which is recognized as valid under the Act. So, Mina's claim that एक सही ना मीना का claim क्या है that no payment can be demanded without physical movement of check is not valid and cannot be maintained. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन बोथ हाउस ठीक है therefore due to urgency प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करना चाहता है डिस्कस इन डिटेल रेफरेंस टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट 1 2 3 लिख लेना दोस्तों ये लिख लिया Article 123 of the Constitution authorizes the President to legislate through ordinances whenever either or both the houses of Parliament are not in session. However, this power of ordinance can only be exercised on the however the power of ordinance can only be exercised on the advice of Council of Ministers
This power is co-extensive with the power of Parliament to legislate on any matter, that is, it can only be passed in matters where Parliament is competent to legislate. President cannot be forced to pass ordinance. He must be satisfied that there is an urgent need. Ordinance is temporary law and must be led before, एक मिनट, ये लेकिन मेरी पेंसिल की बैटरी इधर खत्म हो गई है, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, जल्दी लिखना. ऑर्डिनेंस इज टेम्पररी लॉ एंड मस्ट बी केप्ट, मस्ट बी केप्ट, कुछ हुआ क्या? When it reassembles, ordinance being power unanimous, and the ordinance shall cease to have effect at the expiry of 6 weeks. If both houses reassemble on different dates, then period of 6 weeks shall be counted from later date. यार मेरे को भी बहुत भूख लग रही है, बस लास्ट ही आंसर है ना अब तो. बस लास्ट ही है. लास्ट क्वेश्चन क्या है? इंजुरियस एंड डैमनम. नेक्स्ट इज इंजुरियस एंड डैमनम.
हाँ भूमिका, लास्ट 3 अटेम्प्ट तो हो ही गए, तुम्हारे सामने ही पड़े हुए हैं, बस वो सॉल्व कर लो, बहुत है। लिख ले लास्ट आंसर, एनबी से हasta la vista माय लव। थोड़ा तो चार्ज हो ही गया होगा, 5% हो गई, इतने में तो भाई साहब 2 आंसर लिखता हूँ। ये लास्ट पन्ना हो तो यहाँ पे चीखने लग जाना, मैम शीट, मैम शीट, मैम प्लीज, मैम मैम मैम, ऐसे करके मतलब चालू हो जाना। It is not every damage which is a damage in the eyes of law. It is not every damage which is a damage in the eyes of law. There must be legal injury. There must be legal injury or invasion of legal right. Is in Ashby versus White, it was held that legal damage is neither identical nor it is pecuniary. True maxim follows the above. A. Damnum sine injuria. B. Injuria sine damnum. The given case is of injuria sine damnum, that is legal injury without any damage. The law states that if any person's legal right is injured, then he shall be compensated irrespective of damage. In the given case, Mesh's legal right to vote was denied, which amounted to infringement
of his legal right irrespective that he suffered no damage. This is a violation of his legal right and he must be compensated under law of torts. Done. That's it. And we are done. This completes your paper. I hope you enjoyed this one. कल मिलते हैं for your SBI and let's get done with that. Cool. So बालिका, that was it. We did some really good. 3 पेपर करवा दिए, तीनों देख लेना. ठीक है. Strategy is clear, time allocation is clear, everything is pretty much clear. ठीक है. तो हार्ड कमेंट सेक्शन में चलाओ. तुम्हारा प्यार मोहब्बत वहां दिखना चाहिए. कमेंट सेक्शन को भर देना विद ऑल द एफर्ट्स. एनालिसिस शीट मैं आज रात में बनाता हूँ. कल मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को. कल शाम तक एनालिसिस शीट भेजता हूँ आप लोगों को पक्के से. ठीक है. चला. टेक केयर पीपल. डोंट वेस्ट योर टाइम. हैव अ ग्रेट वन. जय हिंद, जय श्री राम. टेक केयर. बाय. चलो. बाय.